Hello, I'm Dr. Kunal Gupta. I'm a pediatric dentist at Children's Dental Center, Gurugram. I've been working as a pediatric dentist since last 18 years and at this center for last 12 years. Children's Dental Center, Gurugram is a technologically advanced center catering to the oral healthcare needs of children in the age group of 0 to 18 years. I've been working at this center and I have treated almost 25,000 patients in the last 12 years, helping them with their most common problems such as dental caries, malalignment, and improper oral habits. So the most common problems which usually the children face are dental caries, improper oral habits, and certain gum problems. Out of these, dental caries is the most common problem. Almost 60 to 70% of our children face from dental caries. It is also known as dental cavities or tooth cavity, dental decay. The second common problem is improper oral habits, which could be thumb sucking, night grinding, mouth breathing, lip sucking, or nail biting. It is important to treat these oral habits because improper oral habits can affect the development of the face, which in turn leads to improper aesthetics in a growing child. Now that's a very important question. The basics of oral hygiene maintenance are mainly three, that is toothbrushing, dental flossing, and mouth rinsing. Now each of these aids cannot be substituted with each other. That means अगर हम toothbrush कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें dental floss करने की ज़रूरत नहीं है या हमें mouthwash यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर हम mouthwash कर रहे हैं तो हम brushing skip कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. सबसे पहले ब्रशिंग की बात करते हैं. हमें अच्छे से हमारे दांत को ब्रश करना चाहिए, जैसे कि हमारे दांत में जो भी कीटाणु या जिसको हम डेंटल प्लाक बोलते हैं वो रिमूव हो सके. दूसरी चीज़ होती है फ्लॉसिंग. अब हमें फ्लॉसिंग की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि दांतों के बीच की जो सरफेस होती है, अगर हमारे दो दांत हैं, हम जब ब्रश करते हैं हम दांतों के ऊपरी सरफेस को और बाहरी सरफेस को अच्छे से ब्रश कर सकते हैं. रही बात mouthwash की. So mouthwash again is an important aid for maintaining good oral hygiene because mouthwashes usually contain an antibacterial agent. उनमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि माउथ के अंदर जितने भी कीटाणु होते हैं उनके नंबर को कम करता है. तो जब भी हम माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो हमारे माउथ के कीटाणु का नंबर कम होता है. जब कीटाणु कम हो जाते हैं हमारे माउथ में तो डेंटल प्लाक का एक्यूमुलेशन कम होता है. डेंटल प्लाक का एक्यूमुलेशन कम होता है, जो भी हमारे माउथ में डिजीज़ होती हैं उनकी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. डेंटल केरीज़ या जैसे मैंने पहले बताया दांतों की सड़न या कैविटी बनना, ये इसीलिए होती है क्योंकि हमारे दांतों की सर्फेसिस पे डेंटल प्लाक एक्यूमुलेट होता है. नाउ डेंटल प्लाक इज़ अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया. सो बहुत सारे कीटाणु एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं एक पतली सी सफ़ेद रंग की पदार्थ बनती है हमारे दांत के सर्फेस पे, जिसको हम डेंटल प्लाक बोलते हैं. अब ये डेंटल प्लाक जब इकट्ठा रहता है बहुत दिनों तक हमारी दांत की सरफेस पे, और जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, स्पेशली हम कोई मीठी चीज़ अगर खाएं, तो ये कीटाणु वो मीठी चीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं. सो the microorganisms which are present in dental plaque, they act on the sweetened food products which we consume and produce acids. Now these acids will gradually dissolve the surface of the tooth leading to dental caries. तो जो भी हम ये बैक्टीरिया जब ये मीठी चीज़ों के और मीठी पदार्थ पे एक्ट करता है और एसिड बनाता है, ये एसिड हमारे दांत की सरफेस को धीरे धीरे गलाती रहती है और इस गलने के प्रोसेस से दांत के अंदर एक छेद या गड्ढा बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम डेंटल कैविटी बोलते हैं या हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डेंटल केरीज बोलते हैं.
So as I said, if we want to prevent any disease, we have to focus on the cause of the disease. जैसे मैंने बताया, डेंटल कैरीज बनने का जो मेन कारण है वो है डेंटल प्लाक एक्यूमुलेशन और मीठे पदार्थों का कंजम्पशन. सो डेंटल प्लाक एक्यूमुलेशन को कम करने के लिए हमें अच्छे से ब्रश करना पड़ेगा. जब तक हम अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे, हमारे दांतों की सरफेस पे वो फिल्म इकट्ठी होती रहेगी जिसको हम डेंटल प्लाक बोलते हैं, और फिर वो डेंटल कैरीज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरी चीज़ रही, हमें अपने माउथ के अंदर के बैक्टीरिया को भी कम रखना है. उसके लिए भी हमें अच्छे से खाने के बाद पानी से कुल्ला करना है या माउथ वॉश यूज़ करना है. और जो हमारा दूसरा मेन कारण था मीठे पदार्थों का कंजम्पशन, उसको कम रखना पड़ेगा, तभी हमारे कैविटी बनने के चांसेस कम हो जाएंगे. अब मैं ये नहीं कहता कि हम मीठी चीज़ें खाना एकदम बंद कर दें. हमें मीठी चीज़ें खानी है. बच्चों टॉफ़ी, चॉकलेट, इन सबको तो खाना ज़रूरी है. आइसक्रीम गर्मियों में खाना उनको बहुत पसंद है, तो हमें उसके कंजम्पशन को कम रखना है. ऐसा नहीं है कि हम एकदम नहीं खाएं. हम तय कर सकते हैं कि हाँ, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हमें ये चीज़ें खानी पड़ेंगी, पर हमको उसको रोज़ नहीं खाना है. जितना ज़्यादा हम खाएंगे, जितनी ज़्यादा बार खाएंगे, उतना कैविटी बनने के चांसेस कम हो जाते हैं. So in nutshell, we have to focus on 2 things, that is reduction of dental plaque by maintaining good oral hygiene, and secondly by reducing the frequency of sweet intake which we consume. So ideally speaking, toothbrushing should be done not once, not twice, but thrice. Ideally, we should be brushing after every meal, so that whatever we are eating, we are cleaning all the food particles away from our mouth after eating our food items. So हमें दिन में कम से कम 3 बार ब्रश करना चाहिए. अब 3 बार ब्रश करना बहुत बार मुश्किल हो जाता है. लोग ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम 3 बार ब्रश नहीं कर पाते. तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमें 2 बार तो ज़रूर ब्रश करना चाहिए. 1 बार सुबह और 1 बार रात में सोने से पहले. We can divide our brushing into 6 parts, 3 for the lower teeth and 3 for the upper teeth. So 3 for the lower teeth, when I say, I mean lower front, lower left and lower right. Now each of these parts we have to brush on all the surfaces of the teeth. So we have to brush on the outer surface, the top surface, or which is the chewing surface, and the inner surface. So what I usually say is, what we can do is, you can keep counting in our mind. For example, when we start from our lower right side, we can count 10 in our mind, and we are brushing the outer surface of the lower right side. Then we move on to the top surface, or the chewing surface of the lower right side, and we keep counting 10. So that makes it 10 seconds, 20 seconds. And then inner surface, that makes it 30 seconds. Then we move on to the lower front. Again we do the outer surface and the inner surface of the teeth, that makes it 50 seconds. And then we come on to the lower left side, where again we brush 3 surfaces of the teeth, that is outer surface, chewing surface and inner surface. So that makes it 80 seconds total for the lower teeth. Similarly, we do the upper jaw. So in total we have to brush for around 160 seconds. Whenever we brush our teeth, we should focus on brushing. We should not be thinking about what we want to do today, or we have to catch our bus, या हमें आज क्या खाना है, किस दोस्त के घर जाना है, क्या खेलना है. बिकॉज उससे हम अपने टाइम का ध्यान नहीं रख पाते हैं. या तो हम टाइमर रखें अपने सामने, या फिर हम अपने मन में सिंपली काउंटिंग कर सकते हैं. और जैसे मैंने कहा, अगर हम 150 से 160 सेकेंड तक की काउंटिंग रखें अपने मन में, तो हमारे माउथ की नीचे और ऊपर के दांत अच्छे से ब्रश हो पाएंगे. We cannot allow children to brush their teeth themselves. Parents have to be actively involved in their children's teeth brushing. Now, when a child is born, usually the first tooth erupts at the age of 6 months. So I would say from 6 months till 6 years, parents have to be brushing their children's teeth. Once the child crosses the age of 6 years, that means they begin to hold spoons, they can begin to tie their laces, they can have their food on their own. At that stage,
till the child is 10 years old, child can begin to brush their teeth, but under parents' supervision. So parents have to be watching or monitoring their child brushing their teeth. So जब बच्चा 6 महीने से 6 साल तक का होता है तब पेरेंट्स को ही ब्रश करना चाहिए. हम बच्चे के ऊपर ब्रशिंग नहीं छोड़ सकते, बिकॉज बच्चा अच्छे से ब्रश नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ठीक से उस समय इतना डेवलपमेंट ही नहीं होता है बच्चे का कि वो ठीक से ब्रश को पकड़ सके और दांत के अंदर वाले, मुंह के अंदर वाले दांत तक अच्छे से ब्रश को ले जा सके, दांत की इनर सरफेस को ब्रश कर सके. उसके लिए पेरेंट्स को ही ब्रश करना चाहिए. हाँ, जब बच्चा 6 से 10 साल तक का होता है तो हमें बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है कि ब्रश कैसे करना है. उसके लिए बच्चा ब्रश खुद कर सकता है, बट पेरेंट्स को मॉनिटर करना है, पेरेंट्स को वॉच करना है कि बच्चा हर जगह ठीक से ब्रश कर रहा है. वो उसको गाइड कर सकते हैं कि बेटा आपने यहाँ पे ब्रश नहीं किया या इस सरफेस पे आपको ब्रश करना बाकी रह गया है. So parent supervision and monitoring is important till the child is 10, 11 years old, and beyond that the child can brush independently. There are many toothpastes which are available in the market, and mainly there are of 3 categories, 3 types of toothpaste which are available. One is a non-fluoride toothpaste, second one is a toothpaste which has less amount of fluoride, and thirdly we have in India with toothpaste which have 1000 ppm of fluoride. So broadly there are 3 types of toothpaste which are available in the Indian market. Now pediatric dentistry associations world over have recommended that a child from beginning should start using a fluoride toothpaste. That means जो भी हमारे मार्केट में नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट होते हैं हमें उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. So from beginning, we have to use a toothpaste with good amount of fluoride containing at least 1000 ppm of fluoride. So most of the regular toothpaste which are available in our market contain 1000 ppm of fluoride. Now the problem which usually children face with these toothpastes are that they don't like the taste of the flavor of the toothpaste. They find it very spicy, very minty, they find it very tangy. So I have recently come across a toothpaste by Atomy. This is a nice toothpaste which is being brought up by this company, and 2 important properties which it has is definitely one is fluoride content, that is it has 1000 ppm of fluoride, and secondly it contains propolis. Now propolis is a good ingredient because it is antibacterial, and research has shown that propolis being added to the toothpaste helps in reducing the number of bacteria, thereby preventing dental caries. And I have personally used this toothpaste and found that the flavor of this toothpaste is comparable to other kids' toothpaste. That means when kids use this fluoridated toothpaste, a toothpaste which contains 1000 ppm of fluoride and with a good flavor, they will definitely not avoid using a fluoridated toothpaste. So this, I would strongly recommend this toothpaste for all the children. So talking about the toothpaste, I've also come across the toothbrush by this Atomy company. Now this toothbrush is unique in the sense that the bristles of this toothbrush is impregnated with gold particles. The tip of the bristles are impregnated with gold particles, and the benefit of this is that gold having antibacterial properties, the toothbrush doesn't accumulate bacteria from our environment while it is being stored in between our brushing periods. So this toothbrush is also a good brushing aid along with the toothbrush by the Atomy company, and I would recommend both the toothbrush and toothpaste for all the children. So at this point, I would also like to explain the amount of toothpaste which is to be used when we brush our teeth. Since I have said that all our children should be using fluoridated toothpaste, but the amount of toothpaste varies depending on the age of the child. If you have a child who is between 6 months to 3 years of age, so अगर कोई बच्चा है जो 3 साल से कम उम्र का है, तो हमें सिर्फ चावल के दाने के जितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है. We have to use a rice grain size of toothpaste, rice grain size of fluoridated toothpaste for a child less than 3 years of age. Between 3 to 6 years of age, we have to use a small pea-size amount of toothpaste. That means एक छोटे से मटर के दाने के जितना टूथपेस्ट हमें यूज़ करना है 3 से 6 साल के बच्चे के लिए. Between 6
to 10 years of age, we have to use a large pea size amount of toothpaste. So 6 से 10 साल के बच्चे के लिए हमें एक बड़े से मटर के दाने के जितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है. And beyond 10 years of age, we can use a good amount of toothpaste, that means which extends throughout the head of the toothbrush. So through this platform, I would like to convey a message to all the parents seeing this video, that we should give an importance to our oral health. Our oral health is as important as our general health, because mouth is like a gateway for our body. So we have to take care of our teeth right from beginning. We cannot afford to ignore our teeth. We cannot afford to think that milk teeth will fall off and we need not care for them. We should not think कि दूध के दांत हैं वो तो गिर जाएंगे, हमारे पक्के दांत आएंगे, तो दूध के दांत में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमें अटेंड करने की या उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो एट द एज ऑफ फर्स्ट बर्थडे, जब बच्चा 1 साल का होता है, हमें दांतों के चेकअप ज़रूर कराना चाहिए. वी शुड टेक आवर किड्स to a pediatric dentist at the age of 1 year for a first dental visit. A first dental visit is very important because it will educate the parents, it will guide the parents about all the measures of oral hygiene maintenance.